right? So this concept is clear to all of you. What is parameter and where we get? This is in the modeling sections. This new parameters, we learn about fields and numeric range. Okay, so using these two or these numeric range parameters, we can create our next page, which is nothing but a product details. Why we creating this page? Because we want to do analysis for a single product itself, कि एक किसी particular product की अगर प्राइस में कुछ वेरिएशंस हम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं या प्राइस बढ़ाते हैं, तो हाउ आवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल बी इम्पैक्टेड, वो एनालिसिस हम यहाँ पे करना चाहते हैं. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले वी आई जस्ट ड्रैग माय टोटल प्रॉफिट. हमने टोटल प्रॉफिट का एक मेजर बनाया था, राइट? वी डिडंट. We have this profit, right? And also we have our sales also, right? Revenue. So I'll just drag this profit, convert this into the card visual, and this card will give me a profit value for me. Overall profit 10.46 million is my overall profit. Same way, I'll just duplicate this card and I'll just sales value over here. I'll just rename this value for this visuals. Let's say this is my revenue. We call sale or revenue, whatever you wanted to call it. So we say this is our profit and this is my revenue, correct? Now what we going to do is, as numeric parameter, numeric range parameters gives us ability to create a slicers, whatever the range we provided in the parameter. So I just wanted to create one slicers which help me in order to control the price for this product. कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक एक्सेल में एक शो करता हूँ दिस कंसेप्ट. ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज होती है, सो अल्टीमेटली मेरा रेवेन्यू जो होगा वो इंक्रीज होगा, राइट? सो लेट्स से आई एम हैविंग प्रोडक्ट एंड प्राइस and let's say quantity, or I'll directly take sale rather than let's say quantity. Let's say product A, product B and product C. Price देंगे let's say 10, 20, 30 and quantity let's say है 5, let's say 3, 5 and 2. So मेरा जो एक्चुअल सेल क्या होगा या रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू होगा मेरा this multiply by this, right? Price multiply by this quantity. This is my revenue for product A, correct? So this is my revenue. If I sum this all, this is my total revenue. Okay, so let's say मैंने यहाँ पे प्राइस को बढ़ाया है. Let's say I'll increase this price by 10%. ठीक है, तो मेरा न्यू प्राइस क्या आएगा? लेट्स से आई एम हैविंग न्यू प्राइस. मैंने रेवेन्यू का जो मेरा कैलकुलेशन था वो डिपेंड करता था मेरे इस प्राइस के कॉलम पे. अभी मैंने प्राइस को इंक्रीज किया. लेट्स से आई डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस फॉर द ऑल द प्रोडक्ट्स बाय 10%. तो नया प्राइस क्या आएगा? इसका 10 का 10% आएगा, राइट? 10 का 10% मतलब 1 आएगा, सो 11 आएगा. सो 11 जो है, 11 में ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि लेट्स से दिस इज माय प्राइस मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेट्स से 1 प्लस लेट्स से 0.1, correct? If I hit enter, it gives me my price value. ये कैलकुलेशन कैसे किया हमने? वी सिंपली से
कि this is my price. If I add 10% discount, so my new price will be 11. It applicable for all, correct? You understand हुआ this logic? This logic understand होगा कि हमने 10% प्राइस इंक्रीज की है. लॉजिकली हम 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि मैं इस प्राइस को 100 से डिवाइड करके एक वैल्यू डेसिमल्स में लेके आऊँगा, and then I'll add this whatever value in a price. So this is the same only. What I'm doing here over here is इस प्रोडक्ट प्राइस को मैं एक फंक्शन या दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर जो है इट गिव्स मी क्या दे रहा है मुझे वो वट एवर माई न्यू प्राइस जितनी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ वो प्राइस मुझे ये कैलकुलेट करके दे रहा है 1 + 0.1. आई डिसाइडेड टू गिव 10% डिस्काउंट, दैट्स वाई 1 + 0.1. इफ आई डिसाइडेड टू गिव 20%, आई विल सिंपली से 0.2. इट विल बी गिव मी लाइक दिस. ये क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ये? नाउ बेस्ड अपॉन दिस व्हाट इज माय रेवेन्यू न्यू? मेरा नया रेवेन्यू क्या होगा? दिस टाइम्स आई नीड टू कंसिडर this new price, right? This new price multiply by this quantity. So this is my new price. Okay, so this is my, let's say, old revenue 190, and this is my new revenue. This is 228. ये जो 228 जो आया ये क्यों आया? Because I increase my price by 20%. Same way, if I lower my price, for example, instead of this, I'll say -0.2. So it will be reduce the price. 20% मैंने डिस्काउंट दिया है. So in short ये क्या करेगा? प्राइस को रिड्यूस करेगा और अल्टीमेटली मेरी जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगी. लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाउ दिस प्राइस के ऊपर जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं या प्राइस को बढ़ा रहे हैं ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे रेवेन्यू को? समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस नो कुछ तो बोलो. Yes, sir. Yes. Okay. So now same way let's do the analysis in Power BI. सबसे पहले मैं एक मेजर क्रिएट करूंगा which gives me a retail price. अभी रिटेल प्राइस क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट टेबल के ऊपर हूँ और इस प्रोडक्ट टेबल में बिकॉज दिस इज द डायमेंशन टेबल ईच रो कंटेन each row having a single product information, right? So for example I'm taking this product, let's say all purpose bike stand. मैं इस प्रोडक्ट को लिया. ओके एंड ये प्रोडक्ट मुझे क्या दे रहा है? रिगार्डिंग ऑल प्रोडक्ट बाइक स्टैंड इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे एक प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट हैविंग 159 इज द प्राइस. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू का 159 का एवरेज लूँ, इफ आई टेक द एवरेज फॉर दिस 159 वो कितना आएगा? let's अंडरस्टैंड दिस इन एक्सेल. मेरे पास दिस प्राइस का कॉलम है. इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज माय एवरेज प्राइस, व्हाट इज माय एवरेज प्राइस, तो इस सेल के लिए एवरेज प्राइस क्या होगी? ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस. सो हम एवरेज कैसे लेते हैं? वी जस्ट सम दिस टोटल, जितना भी टोटल रहेगा मेरा, व्हाट इज इट, 60, राइट? सो वी से 60 डिवाइड बाय कितनी, काउंट कितना है, 1 2 3. सो 3 इज माई काउंट.
So average price will be 20. But if I'm talking about this single row, इस पर्टिकुलर सिंगल रो के लिए एवरेज प्राइस कितना रहेगा? 10 only, right? Because price is 10, product count is 1, so 10 divided by 1, 10. So in Power BI, when you do aggregations, so मेजर्स जो होते हैं, मेजर्स एक कॉन्टेक्स्ट फॉलो करते हैं. इट इज कॉल्ड एज रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी से. सो कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर सेल के लिए, उस पर्टिकुलर रो के लिए वो आपको एवरेज दे रहा है. सो इन शॉर्ट, अगर मैं एक नया मेजर बनाऊँ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस प्राइस कॉलम, आई वांट टू जस्ट using this price column, I create a new measure. Instead of creating a new column, I can create a new measure which gives me same value A B C. प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस मुझे देगा. इसके लिए मैं कोई भी एग्रीगेशन फंक्शंस यूज कर सकता हूँ. आई एम यूजिंग एवरेज, आई एम यूजिंग मैक्स, whatever. ठीक है. सो आई एम यूजिंग एवरेज एज एग्रीगेशन फंक्शन. सो ईच सेल के लिए मुझे सेम वैल्यू देगा वो. This sales gives me 10, this gives me 20, this gives me 30. If I aggregate all this gives me 20. ठीक है. So let's create one measure. I'm creating one measures. Let's say in the measure sections, I'll say new measure name is my average retail price. Average retail price equal to, I'll say simply average. Average what? हमारा जो प्रोडक्ट टीम का कॉलम है, प्रोडक्ट टीम के कॉलम के प्राइस का जो कॉलम है, प्रोडक्ट टीम टेबल का प्राइस का कॉलम, उसका एवरेज दो मुझे. ठीक है. सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेबल विजुअल में, लेट्स ट्राई दिस इन अ टेबल विजुअल, सेलेक्टिंग दिस टेबल विजुअल. यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टीम के अंदर से लेट्स से प्रोडक्ट नेम लिया एंड आई एम टेकिंग प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम. जो हमने नया मेजर अभी क्रिएट किया, सो बेसिकली ये क्या दे रहा है मुझे? हर एक प्रोडक्ट की प्राइस दे रहा है, राइट? प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की प्राइस है. एंड इफ आई ड्रैग दिस एवरेज रिटेल प्राइस, दिस एवरेज रिटेल प्राइस हियर, यू सी हर एक सेल में मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे टोटल्स में क्या कर रहा है वो? सभी का एवरेज दे रहा है मुझे. अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाउ दिस मेजर्स वर्क्स? मेजर्स क्या करता है? हर एक रो के लिए, हर एक रो के लिए वो फिल्ट्रेशंस करता है एंड कंसीडरिंग दिस एज ए इंडिपेंडेंट वैल्यू. कि लेट्स से मुझे अभी दिस सेल के लिए, दिस रो के लिए एवरेज निकालना है, तो प्राइस कितनी? 159. प्रोडक्ट का काउंट कितना है? 1. सो 159 by 1, इट इज सेम 159. करेक्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगर मैंने एवरेज रिटेल प्राइस निकाला है, देन आई वांटेड टू कैलकुलेट न्यू प्राइस आल्सो बेस्ड अपॉन माय डिस्काउंट, राइट? जैसे हमने एक्सेल में दिस पर्टिकुलर न्यू प्राइस का एक कॉलम क्रिएट किया. यहाँ पे वो क्या कर रहा है? जितना डिस्काउंट हम डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे 0.2 देना है, डिस्काउंट देना है या प्राइस इंक्रीज करनी है, वट एवर वी डिसाइड, बेस अपॉन दिस ये हमें क्या कर रहा है? एक नई प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है. करेक्ट. सो अभी हम ये तो कंसिडर नहीं कर सकते ना कि मैं 10% ही डिस्काउंट दूंगा या 20% ही दूंगा. मुझे यूजर को या वटेवर जो मेरा रिपोर्ट कंज्यूम करेगा, उसको मुझे ये फिजिबिलिटी देनी है कि वो वैल्यू वो खुद चूज करे कि उसको डिस्काउंट देना है या प्राइस इंक्रीज करनी है. एंड दैट्स व्हाट दिस numeric range parameters comes to the picture, right? So let's create this parameter, numeric range parameter. I'll say, let's say this parameter name is my, let's say, adjusted price. This is my name for this parameter, adjusted price. Data type will be, let's say, my decimal numbers. Minimum will be -1. Why -1? And increment will be the 1. Why -1? 1 because 100%, right? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप 100% कम कर सकते हो या 100% बढ़ा सकते हो. करेक्ट. इसीलिए -1.
वन, -1 मतलब मैंने प्राइस को 100% डिस्काउंट दे दिया, +1 मतलब मैंने प्राइस को 100% बढ़ा दिया है, and increment will be my, let's say, 0.1, 0.1. So it's like 10%, 20%, 30%, 40%, like this. Okay, so I'll just create this parameter समझ में आया ये numeric range? We name this as adjusted price. We keep this data type as decimal because we know that values जो आ रही है यहाँ पे वो decimal में आएंगी. इसका आउटपुट कैसे लगेगा? एक कॉलम जनरेट होगा जो -1 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट -0.1 करते करते वो 1 तक पहुंचेगा. दिस इज व्हाट दिस न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स डू. एक और चीज, जब भी हम न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक कॉलम मिलता है. वी आल्सो गेट वन मेजर आल्सो. वो मेजर हमें क्या करता है कि वॉट एवर वैल्यू वी सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, that particular value this measures gives as a output. I'll just say add slicer to this page because I wanted slicer for this. Okay, so this is my slicer. Let me do some formatting for this. Let's say me do some formatting. Let's say I'll just with this color. I'll go to this product detail page and apply same background color for this also. Okay, and let's say increase some font for this. ठीक है, हमारे पास अभी एक एडजस्टेड प्राइस का कॉलम है. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जब भी मैं इसको let's say for time it is not creating adjusted price. This one, oh sorry, I think we wrongly created it. Actually this will be the -1, 1, and increment will be the 0, like this. Like this. So I'll go to the numeric range parameter. Let's say decimal number. Say minimum will be the -1, maximum will be the 1, increment will be the 0.5.
this would be minus 1 1 0.1. Just apply the same for this. Just having some issue. Let me remove this. Okay, and create. And just delete it. And I'll use this one. This is my parameter. Let me rename this. Adjusted price and for the name for this measure is, let's say, adjusted price value. Adjusted price value. This is my adjusted price, right? Whatever I'm selecting over here, it will be giving me this output. So what it indicates, let's say -1 indicates I'll provide 100% discount, +1 indicates I'm giving you 100% hike for the price. Okay, and this particular measures, this adjusted price measures gives me whatever the value I'm selecting. Let's say if I select 0, it will be 0. Let's say I'm selecting 0.40 over here, it gives me 0.40 minus 0.40. Whatever the value I select over here, it gives me that particular value, this adjusted price value. We already see this, right, in last lectures. Whenever you create a numeric range parameters, it gives you one column and one measure. This will be auto created. This columns is the range for the whatever you provided, mean, max, and increment, and this measure will be giving you the output, whatever the value you selected in the particular slice. Okay, so now we can use this measure, this adjusted price value measure, in order to achieve this, right? हमारा जो न्यू प्राइस का जो फॉर्मूला था, लेट्स से वी यूज दिस फॉर्मूला. सो इंस्टेड ऑफ दिस 0.2 टू बी हार्ड कोडेड, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेजर की वैल्यू यूज कर सकता हूँ कि वट एवर द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन द स्लाइसर्स, take that value and calculate the price. If I selected -0.40, it automatically give the 40% discount and calculate the value. So how we can do this? So let's me create a new measure. So I'll go to this my measure sections, and let's say I'll create a measure for new measure, which gives me, let's say, adjusted. I'll name this as adjusted price. Adjusted price जो मेरा नया मेजर होगा, वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करके देगा मेरी नई प्राइस. सो इस केस में what we take this average retail price, this measure we already created. This gives me same value, right? Average retail price plus, multiply in bracket 1 plus, instead of hard coding value for this, we say refer this particular measure which is in the adjusted price value. We say adjusted price value, refer this particular measure. If I hit enter,
if I hit enter and if I drag this into the our table visual, यहाँ पे अगर मैंने इस table visual में if I drag new adjusted price वाला जो मेरा column है वो अगर मैंने drag किया, you can able to see the values are changing. If I say see मैंने 100% डिस्काउंट दे दिया, so adjusted price will be 0, correct. If I increase the price, that means value will be the positive. Let's say मैंने 10% increase किया, so the values in the adjusted price will be increased by 10%. ये समझ में आया? How we achieve this? Correct. We use same logic which we understand in Excel. ये लॉजिक हमने यूज किया एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक्स वी क्रिएट दिस वन एडजस्टेड प्राइस. नाउ इफ आई एम हैविंग एडजस्टेड प्राइस देन आई कैन कैलकुलेट माय न्यू रेवेन्यू राइट बेस्ड अपॉन दिस एडजस्टेड प्राइस. हमने रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया था या सेल कैसे कैलकुलेट किया था? we do sum x functions, right? Whatever we calculate over here, we simply say calculate sum x and we say कि refer this related product price का column from the product table. So instead of this I can say refer the new adjusted price measure, correct. So let me create a new measure. I'll name this as a adjusted revenue or adjusted sale, whatever, is equal to calculate sum x just table is my it's a sales fact tables and my expression will be Sum of adjusted price is one of the sorry sum of adjusted price is we calculate this sales using iterator, right? This one. So we need to multiply this new price with order quantity, correct. So we say sum x, table is our sales fact tables and our column is order quantity, correct. Order. Sales facts order quantity multiply by adjusted price, right? This one. Now if I drag this in the same way, now you see the difference, right? This is our original 24.91. If we increase the price by 10%, our revenue will be go up. Logic समझ रहे हैं? Based upon user selections, if I reduce my price by 10%, my revenue will be goes down. Online student समझ में आ रहा है ना ये? Yes, sir. yes, sir. Okay. So now we having some clear picture that our adjusted based upon our adjusted price, user can control this value and based upon this value, adjusted price value, revenue will be adjusted. Same way the profit also adjusted, right? So if I wanted to see the profit, how my profit will be impacted, हमें क्या करना पड़ेगा? Profits के लिए measure create करना पड़ेगा. How we previously calculate profit? We simply say my sales minus total cost. This is what we do, right?
हमारा जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज माय प्रॉफिट. So again I can say my new measure will be my adjusted profit. Let's say this is my adjusted profit, and if I say whatever my this adjusted revenue, this is my adjusted revenue minus total cost. Cost will be the same, right? If I hit enter, this gives me adjusted profit. Let me run this over here. Sorry, adjusted profit. So this is my 7.97 million is my adjusted profit. It impacted based upon whatever the price I adjusted over here. ठीक है. We see we have the start of the week. Start of the week है हमारे पास. Start of the week नहीं है. Okay, so I'll just remove this table. Don't want it. And I'll adjust this. This example. This is my select all, drag this required. ठीक है. यहाँ पे लेट्स से अरेंजमेंट आपको करनी है. लेट्स से आप यहाँ पे एक मेरा मेजर है, यहाँ पे लेट्स से मेरा एक विजुअल है. सो आई कैन सेलेक्ट ऑल दिस. मुझे अगर सब में सेम स्पेसिंग रखनी है, सो आई कैन सेलेक्ट ऑल. लेट्स से मैंने सबको सेलेक्ट किया. ये जो फर्स्ट है एंड जो लास्ट है, इनकी पोजीशन सेम रहेंगी. जो मिडल वाले हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे सेम हाइट पे. कैसे? लेट्स से आई गो टू द फॉर्मेट. यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली. इनसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, सो वो अलाइन हो जाएंगे. ये कब काम में आते हैं? जब आपको इक्वल स्पेसिंग रखनी है विजुअल के बीच में. उस टाइम पे कभी कभी आप मेजर्स सॉरी स्लाइसर्स क्रिएट करते हो. यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसर्स होते हैं, तो हर एक स्लाइसर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. स्पेसिंग उनमें प्रॉपर होनी चाहिए. उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो. सो फॉर माय केस adjusted this. This one, distribute centrally, and I adjust this. And I can select all. Say distribute. Okay, just remove this. ये क्लियर है अभी how we calculate this? Now let's create some chart. So I'll take my line chart because I wanted to see the trend. मुझे ट्रेंड शो करना है प्रॉफिट का, how it will affect my regular profit and my adjusted profit. So in the x-axis I'll say give me month year, this one, and in the y-axis I'll say this is my adjusted profit and this is my regular profit. ठीक है. ट्रेड का सेम रहना है इसमें दोनों. Yeah, but again see
this will be this, आप ये अभी कैसे देख रहे हो, ये ओवरऑल देख रहे हो. If I select one product, it will be give you more clear picture. Let's say मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है, ठीक है, so let's say having product name over here and say this is my slicer. If I select one product, it will be giving me a clear picture की profit and adjusted profit. ठीक है, so for time being I'll just keep this. Let's say slicer setting, give me a drop down. के लिए मैं नीचे रख रहा हूँ इसको. ठीक है, यहाँ पे इसको रखता है. Let's say markers will be visible. ठीक है, fine. So we got a trend for the profit and the adjusted profit. Same way, let's say I'll do the analysis for my quantity. Let's say now I wanted to create some God charts. God chart क्या करता है, हमें एक प्रोग्रेस शो करता है, राइट, टुवर्ड्स द गोल. हमने इवन एग्जीक्यूटिव समरी में भी we saw this, right? Simply we saw this KPI is also, right? KPI is also giving you the progress, right? Whatever your current is having and what is your goal, what is the progress towards your goal, it is showing in the numbers. But in the God charts, you showcase this in a visually, right? So how we can see, let's say take example for the quantity, return quantity. We having return quantity, right? We calculated return quantity. This is our total return quantity. Just put this in the total return quantity. It say total return is 1228, correct? Now I wanted to see, I wanted to give some target also, मेरा target कितना होना चाहिए. So I'll say whatever the return in the previous जो मेरा previous month का order quantity या return quantity है, उससे कम होना चाहिए. ठीक है, so how we calculate previous month return? We again use time intelligence functions, right? So I'll say new measures. ऑर्डर कंटिन्यूटी ऑलरेडी काटना है ना. So we calculated for returns. हमने order quantity का calculate किया, return quantity का. Previous month return. Let's say calculate my total return. This is my total return quantity. Let's say date add. This is my calendar tables date का column. Number of interval with the -1 and interval being month. This is my previous month return order quantity. Select this in the target one. Fine. So this gives me this 1661. This is my previous month order quantity and 1828 is my total order quantity. So it gives me some marking also that this is your limit.
this is your target and you cross it. Correct. Same way we can use for, let's say, my total order quantity. If I'm calculating for a total order quantity, this is my return. Instead of return, I'll say I wanted to calculate for order quantity, total order quantity. But total order quantity जो मेरा रहेगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा कि प्रीवियस मंथ की ऑर्डर क्वांटिटी से 10% इंक्रीज होना चाहिए मेरा ऑर्डर क्वांटिटी इस मंथ. दिस इज माय टारगेट. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें प्रीवियस मंथ का ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 1.1. 10% मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. इन दिस वे यहाँ पे देखो, जैसे हमने, हमारी प्राइस 10 थी, अगर मुझे 10% इंक्रीज करनी थी तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली वी से 1 plus 0.1, right. So this gives me what, 1.1, correct. So मैं किसी भी वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, so ultimately I increase 10%, correct. So we say we already calculate previous month order quantity, right. Let's say previous month, yeah, we have this previous month order quantity already calculated, this one. So in top of that we say new measure target for my order quantity, इसको नाम देते हैं, let's say target or order quantity equal to whatever my previous month order quantity multiply by 1.1. This will be automatically increased by 10%, and I'll add this in my target value. Instead of this previous one, let's say target for order quantity. Okay, so it is, both are little bit same but not actually same, right? It's showing 24K, but somewhat different is there. Basically we achieve it. Our target is 83, we achieve it, correct. So same way you can calculate for sale also, previous month sales and all this stuffs. For the timing I'll just calculate for 2. Okay. Okay, so let's create one more chart. One more chart for let's say I'm using area chart. This area chart will be give me a value for, let's say, my year month. It's my year month. I'm just using month year as a x-axis, and in the y-axis I'll say my order quantity, total order quantity. Okay, so this gives me kind of a month wise my order quantity. Now important thing is this gives you a whole, all the product taken under considerations, and it gives you a value. Now here is one more thing. Let's say I am on this first page, executive summary, and I wanted to, let's say, see how this hitch rack 4 bike will be performing this particular product. Okay,
मुझे इस सिंगल प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है. So I can use a drill through functionality which is available over here. You see this options, add a drill through fields over here. इसका मतलब होता है कि जो भी मेजर्स या जो भी कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो मेजर्स या वो कॉलम अगर किसी कैलकुलेशंस में यूज़ किया हुआ है तो वो कैलकुलेशंस उसको फिल्टर करेगा. कैसे? लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट नेम. आई एम एडिंग दिस प्रोडक्ट नेम इन दिस ड्रिल थ्रू सेक्शन. ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया, इफ आई गो टू द एग्जीक्यूटिव समरी एंड ओवर हियर right click, you see this drill through option is coming. If I go to the product details page and I'll remove this, and if I again go to the executive summary, it will be, if I right click, see options नहीं आ रहा drill through का. वो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट नेम के कॉलम्स पे आएगा, और जितने भी विजुअल्स रहेंगे जिसमें जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट नेम का कॉलम यूज किया है, उन सभी विजुअल्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आएगा. अगर मैंने यहाँ पे वो ड्रिल थ्रू की फील्ड ऐड की है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पेज, किसी भी पेज के ऊपर आप ड्रिल थ्रू के फील्ड के सेक्शंस के अंदर अगर कोई कॉलम से मेजर ऐड करते हो, तो किसी और पेज के ऊपर से अगर वो कॉलम या मेजर यूज किया हुआ है किसी विजुअल्स में, तो ड्रिल थ्रू का ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएगा. जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स में हमने प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है वो यहाँ पे ड्रिल थ्रू के सेक्शन में डाला. इफ आई गो टू द एग्जीक्यूटिव समरी एंड इफ आई राइट क्लिक, इट से ड्रिल थ्रू. यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ पे सब कैटेगरी यूज की है. इफ आई ड्रिल थ्रू ऑन, यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इट डजंट कंटेन द प्रोडक्ट नेम. करेक्ट? Card visuals doesn't support drill through, but this having my product. So if I right click on this product and say drill through on product details, it can be showcasing me for this product only. कैसे पता चलेगा? Let's say मैं इस adjusted price को थोड़ा कम कर देते हैं, and यहाँ पे मैं एक कार्ड ऐड कर रहा हूँ. So I'm adding a card. इसमें मैं प्रोडक्ट नेम ले रहा हूँ. We reduce some font. So 24. I don't want table. जब भी मैंने ड्रिल थ्रू ऑन किया तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक बटन्स आ गए, एक एरो क्रिएट हुआ. कंट्रोल प्रेस करके इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा. आई अगेन ट्रैवल टू बैक टू दैट पर्टिकुलर पेज जहाँ से मैंने ड्रिल थ्रू किया था. इफ आई लेट्स से दिस फेंडर सेट माउंटेन, इसके ऊपर मैंने ड्रिल थ्रू किया. गो टू द प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, you see fender set mounted. This is my product, or this is the analysis for this. This is how this drill through functionality work. We will again see this drill through in detail in next class, but you can use such a kind of analysis in order to do, or in order to provide more insights from your reports to your consumers. Understand over this page, product details, online student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the next class we will learn more concept in Power BI. जैसे bookmarks है, drill through है, calculation groups है. We'll see in next class. Okay.
Just wait. I'll just capture the attendance. Just wait. Yeah, capture. Thank you.